नमस्कार। तो डियर वंस, OCS रो प्रिलिमिनरी रिजल्ट बाहरला पोरे मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग रेडी फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली जे वॉरियर जे युद्ध करे से फलाफल को अपेक्षा न करी सब युद्ध पर प्रस्तुति करे। एवं OCS रो गोटे बड़ लक्षण है कौन? परसिवरेंस। डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिस्पाइट फेल्योर्स, you have to work on and work on। कारण तुम्हें जदि तुम्हें परस्पिकासिटी को देखुथिबो कि गोटे बेसिकली जे तुम्हें देखुथिबो कि मोर गोटे चांस रे हबो कि दिटा सेंति केबे माने से जो टाइप रो मेंटालिटी ता हमको बेसी खतरनाक साबित हुए। तनु स्टे देयर until you are done, until you are in the list। तेणु यहाँ गोटे कंटिन्यूटी प्रोसेस। तेणु केबे ओरिड होनी कि मोर ए चांस हम कि से चांस तेणु दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौ दिन तुम केतबेले मैच्योरिटी आसीजिव राइटिंग रे एवं केतबेले तुम्हें माने क्वेश्चन तुमको फेवर करिजिवो से चांस ता तुम रही जीवो। तो यही परिप्रेक्षी रे पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस जो अच्छी पेपर 2 GS2 जो अच्छी GS2 जोटा कि गोटे वाइटल रोल प्ले करे हमर सिलेक्शन प्रोसेस रे। कारण से ही मार्क आम अधिक स्कोर करि परिबा। कारण एटा बेसिकली अंडरस्टैंडिंग रो पेपर टा एटी बेसी फैक्ट्स फिगर छड़ा बेसी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस ऊपर बेसी डिपेंड करिवो इन कंपैरिजन टू अदर पेपर्स। माने एक्सेप्ट एथिक्स पेपर छाड़ देले GS2 टा भी गोटे एनालिटिकल पेपर हुए। तेनु सेति पे मु किछि क्वेश्चन आपन मानकू जणै देबी जोतरे आपन मन प्रिपेयर हवा दरकार। मु किछि आईडिया देबी कारण आमे क्वेश्चन लिखिबा पई तो आंसर राइटिंग बैच ऑलरेडी हमें करिछु। तो एथिरे मु तुमको खाली आईडिया दे देबी तुमे केमती से जिनसटा सेही एरिया ऊपर प्रिपेयर हबो। कारण बेसिंग अपन द करेंट डेवलपमेंट्स क्वेश्चन बेसी आसु। जेमती आर्थर देखो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऊपर क्वेश्चन आस्तिला। कारण प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गोटे रेफर करथिले सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 143 अंडर रे जो वेटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर विथ रिगार्ड्स टू ए स्टेट बिल से क्वेश्चन टा आसला। तो बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें देखिबो विकसित ओडिशा ऊपर आसला। तो जोगुरा सब न्यूज रे थिला सारी ऊपर बेस करी स्टैटिक पार्ट को नहीं के आसला। कोआलिशन गवर्नमेंट जेतु चली फास्ट क्वेश्चन थिला कोआलिशन गवर्नमेंट ऊपर। तो बहुत सारा क्वेश्चन मु देखुतली जोटा कि तुम्हें भी जानि परिबो कि करेंट पर्सपेक्टिव रे जो 1 ईयर बैक भितर जो करेंट डेवलपमेंट गुरा सब होउची तारी को आधार करी स्टैटिक क्वेश्चन आसुची। तेणु से एंगल रे आमे देखिबा दरकार कि प्रश्न केमिति रहिबा दरकार। गोटे प्रोबेबिलिटी एरिया में रखिबा दरकार। गोटे प्रोबेबिलिटी एरिया में देख रखिले सेटा हमको बेसी यूजफुल होबो। कारण फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको आगे एरिया जानिया पड़ियो। कारण आमे जदी विदाउट प्लानिंग विदाउट एप्रोप्रिएट थॉट वी आर टॉकिंग वी आर प्रिपेयरिंग वी आर रीडिंग जस्ट पॉलिटी पढुची मु हिस्ट्री पढुची मु ज्योग्राफी पढुची ठीक अछि। किंतु ए वर्ष बा अपकमिंग एग्जाम जा पई मु प्रिपेयर होउची ता पई मु कोटा बेसी स्पेशल बा कोटा स्पेशल फोकस देबी कोटा को मु अधिक फोकस करबी। एटा भी जानिबा गोटे OCS एस्पिरेंट बा सिविल सर्विस एस्पिरेंट रो गोटे बड़ काम चीफ ऑब्जेक्टिव। कारण एटा जदि आमे न जानिबा ताले आमे कंसंट्रेट करि परिबानी फोकस करि परिबानी शार्पेंड हेई परिबानी एवं हमकु अनेक टाइप रो क्वेश्चन जतो आसी जिवो हमकु बहुत फंबल लागिवो कि भाबियो पड़िवो कि अच्छा मु जदि भाबी देइथांती करंट पर्सपेक्टिव रे हुए तो क्वेश्चन रो मु प्रिपेयर हेइथांती ठीक अछि। तो सेति पे मु बेसी तुमरो जो समय नबिनी कारण मु चाहूची कि तुम माने ए जो हमर लेवल देखन आंसर गोटे लिखिला माने तो हमको जेतेले 3टा 4टा आंसर लिखिले तो घंटा घंटा जीवो। यू डोंट may not have the patience to watch this type of class and video because you are getting prepared। सेति पे किछि क्वेश्चन मु तुमको मझिरे आनी कि आलोचना करई देबी तापर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव गुरा कहि देबी जोटा कि तापर अपन माने ताको लिखि देबे तार मिनिमम पॉइंट्स गुरा टिके प्रिपेयर हेइ जिवे एवं रेडी थिबे ताको माइंड रे रखि दिबे कि क्वेश्चन ता हेइ पारे कि सर कहिथिले क्वेश्चन ता हेइ परिबो कि। ओके आरंभ करिबा। तो ए सब प्रश्न OCS मेंस रे आसीबो पॉलिटी गवर्नेंस डिटेल एनालिसिस ऊपर मानिचे क्वेश्चन। ओके so one of the best quote I think कि when it rains look for the rainbow, when it dark look for the stars। rain it stands for difficulties, problems, tensions।
समस्या आसो आम जो कौन से गोटे कम करुचे प्रिपेयर होचे बहुत सारा प्रेसर आसुव बहुत सारा गोटे काली बहुत गोटे पिला आसला कि सार कौ बापा कहते 3टा चांस हो तू कौन करुचु तो एमती टाइप रो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आसो डिफिकल्टीज आसो हुए तो फाइनेंशियल इश्यू भी आसीपे बट वी हैव टू लुक फॉर द रेनबो we have to look for the rainbow means we have to be hopeful, we have to be encouraged, we have to first expedite our process jaldi jaldi hame kaam kariya padibo ebong when it is dark means when it is mane hardship or when there is failures you should look for the star you should look for guidance for people for inspiration from other sources. So that will lead you to success because life is not to be taken negatively. Life is to be taken positively every time we are living our life and this is once for all. Okay, so that is the things ki this is very inspiring quote that will encourage. Okay, तो आसीबा हमें तो जोटा फर्स्ट क्वेश्चन मु रखी छी तुम पे एटा गोटे क्वेश्चन हेई पारे व्हाट इज ब्रेन ड्रेन इन लीगल सिस्टम suggest remedial measures basing upon the recent Supreme Court direction SC direction माने ब्रेन ड्रेन कहले माने लीगल फैक्टरी जो यंग लॉयर्स माने दे आर नॉट sticking to legal practice the legal profession because they are not getting good money but they are unable to earn good salary or good income. Therefore they are leaving the legal stream कारण आम देखिए यंग लॉयर माने जो मैंने प्रैक्टिस जाऊँच से फाइनेंशियल स्कैरसिटी बहुत रहे कारण देयर इज नो स्ट्रीम एवं जहाँ भी अच्छी आमर जो लीगल सिस्टम ब्रेन ड्रेन कहीं हो ब्रेन ड्रेन हबार कारण ब्रेन ड्रेन माने ये कौन ना जो मैंने लीगल प्रोफेशन करुँच अदर सेक्टर को डाइवर्ट ये ब्रेन ड्रेन माने फॉरेन जीवा कथा छाड़ दियो ब्रेन ड्रेन थ्योरी जोटा आमर करथिला दादा भाई नारोजी सेटा तो अलग कथा बट एटी ब्रेन ड्रेन माने यंगर प्रोफेशनल लॉयर्स जो माने यंग लॉयर्स दे आर नॉट sticking to the profession they are shifting their profession to other professions where they will get money. Why? Because in lawyers profession the income is very low. केस केते मिले चैम्बर रे काम करथिबे केते पैसा पाउथिबे तो सेति पई होची सेति पई सुप्रीम कोर्ट एबे कहचन गोटे यंग लॉयर्स एसोसिएशन फंड गोटे असिस्टेंस फंड गोटे करिया दरकार जोते यंग लॉयर मानको जो 6 जन जियो लॉयर केस करिथिले तांकरी राय ऊपर सुप्रीम कोर्ट गोटे तांकरी केस ऊपर गोटे सुप्रीम कोर्ट राय दैछंती कि गोटे यंग लॉयर्स असिस्टेंस फंड करा जाऊ तेनु ए परिप्रेक्षी क्वेश्चन आसी पारे कि काहे कि ब्रेन ड्रेन होची. One of the major reasons of brain drain is a faulty legal system, legal recruitment system. In legal services, only subordinate judiciary रे अच्छी हमारा judicial service जो अच्छी अदर हमारा ओडिशा रे OCS होची. So for the recruitment in the subordinate courts, there is no such procedure for appointing judges from the young lawyers to High Court and Supreme Court. High Court and Supreme Court and the High Court, Supreme Court judges are appointed on the basis of collegium, which is often criticized to have bias. Sorry to say, but there is biasness, there is nepotism, there is favoritism. So young lawyers are not getting chances. Those who are proficient, those who are legal. So आरी ऊपर जोटा अच्छी जो सिस्टम ऊपर लीगल सिस्टम फॉल्टी लीगल सिस्टम है तो यहाँ को ब्रेन ड्रेन आग ब्रेन ड्रेन टाक डिफाइन कर दियो ब्रेन ड्रेन कौन ना शिफ्टिंग प्रोफेशंस टू अदर प्रोफेशंस बिकॉज देयर इज नो pecuniary benefit or pecuniary help assistance available to the young lawyers, therefore they are leaving their professions. And out of the faulty the reason should have faulty, there are faulty legal service recruitment system, legal services recruitment system. It would a major things. Okay. So had there been recruitment legal system for High Court and Supreme Court, then law would have been a bright profession for the lawyers, but it has not been there. Another thing is there is no assistance available from the state side, from government side. Jemti jota Supreme Court कहले कि young lawyers
असिस्टेंस फंड गोटे करिया दरकार जो माने कि जेतेबेले तांकर किछि इनकम नथिबो से माने से असिस्टेंस नेबे एवं जेतेबेले से माने इनकमेबल हेबे बा जे माने से माने इनकम करिवे से माने से कर्पस को किछि दे रिटर्न करै देबे गोटे बहुत ब्रिलियंट आइडिया द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डेवलप तो तारी ऊपर तुम क्वेश्चन पचारि पारे तो एमती बहुत सारा तुम सिस्टम फॉल्टी लीगल सर्विस सिस्टम लिखि परिबो तापरे लैक ऑफ कौन लैक ऑफ पिक्यूनियरी सेफ्टी इटा गोटे मेजर जिनस देयर फॉर देयर सेफ्टी ब्रेन ड्रेन होउची एंड नो सच स्टेट असिस्टेंस जोटा कही सुप्रीम कोर्ट लिखो तो 3-4 पॉइंट रे आराम से तुम यहाँ को कर परियो बट आउपरेट भी चिंताधारा आम करबो जो आंसर राइटिंग बैच रे मु एक क्वेश्चन टा डिटेल लिखेबी तो यहाँ ही डिटेल क्वेश्चन तो प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक कॉन्सेप्ट ऊपर केवल पॉइंट गुरा मेनली तुम्हें आइडेंटिफाई करो एवं ताको साइडलाइन करो ताले यू विल गेट कंफर्टेबल इन राइटिंग द आंसर्स इज दैट क्लियर और नॉट सो दैट इज ए क्वेश्चन यू कैन आस्क यू कैन एक्सपेक्ट इन योर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशंस इन OCS 2025 so these are the state and work upon it, get some ideas and also collect some ideas and note it down, then proceed to another count. So think this way रे थिंक कले कौन हम ना तुमको बेसिकली कौन हम ना तुम पाखे किसी एरिया रहिबो जो एरिया ऊपर तुम काम कर परियो कारण एते सारा एरिया अच्छी जे आमे आमे कौन एटा को आमे कवर करि परिबा नाही से पॉलिटी हो गवर्नेंस हो हिस्ट्री हो सोशल जस्टिस हो इकोनॉमी हो तो सब प्रोबेबल एरिया ऊपर काम करो जोटा कि लिंक करियो का सहित ना करेंट नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट सहित रीजनल डेवलपमेंट भी तारी ऊपर क्वेश्चन से पचार देबे कारण एते क्वेश्चन मेकर भी से देखिबे ना कि कोनटा केते हमें रिलेवेंट अच्छु केते हमें एक्वेंटेड अच्छु सिस्टमेटिक सिस्टेमिक डेवलपमेंट सहित केते हमें एक्वेंटेड अच्छु केते हमें कोन माने थरो अच्छु ए विषय रे सेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि प्रोबेबल मु भाबुची कि आर्टिकल 21 ऊपर जो ऊपर गोटे शॉर्ट भी करछि तुम मन देखिबो कि राइट टू वॉक ऑन द फुटपाथ is declared to be a fundamental right under Article 19(1)(d) and under Article 21 by the Supreme Court in recent cases. In 2 days ago, or you can say 3 days ago on last Friday, Supreme Court in a hearing said that right to walk safely on the footpath is a fundamental right of individuals. Life cannot be under threat by walking. Walking is a fundamental right because people depend upon walking for health purposes, for various purposes. तो जदि लोकटा रास्ता रे मॉर्निंग वॉक रे जाउची कि इवनिंग वॉक रे जाउता ऊपर गाड़ी माडी जाउ जेंती गोटे 5 वर्ष पिला ऊपर गोटे गाड़ी चढ़ी गला से मरी गला सेही केस ऊपर सुप्रीम कोर्ट एटा कहिसंती कि जदि एमती हुए ताले लोक माने वॉकिंग प्रति लोकंकर भय आसीबो सबु जगह तो पार्क नहीं सबु जगह तो वॉकिंग फैसिलिटीज नहीं बड़ बड़ शहर कथा अलग छोट छोट शहर तो एगुना नहीं लोक रास्ता ऊपर चलिए इवनिंग रे हो मॉर्निंग रे हो ताले केमती हबो तेनु राइट टू वॉक is a fundamental right under Article 19(1)(d) and under Article 21 बोली सुप्रीम कोर्ट कहिसंती एवं जो माने भी रास्ता तैयारी करूछंती बा जेतोबे भी रास्ता तैयारी होची इट मस्ट बी एन्श्योर्ड दैट देयर इज ए फुटपाथ on both sides of the road for safe walking by the pedestrians. So pedestrian मानक द्वारा safe walking पाई both side of the road रे फुटपाथ रहिबा अनिवार्य बा इनएविटेबल बोली सुप्रीम कोर्ट कहछन तो से परिप्रेक्षी रे हम गोटे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिबा कि आर्टिकल 21 is termed as the fundamental of fundamentals, discuss the relevance of widening scope of the right to life and personal liberty in the context of recent judicial interpretation. So that is a personal liberty because walking is a personal liberty. Man walks, people walk for health purposes. For this is a property. I'm feeling bored, so I will take a walk. So this is my fundamental right. So therefore it is a personal liberty, personal freedom. So that should not be threatened. That should not be understood. So you can write under this
कि पूरा एक गोपान केस कथा लिखिबो मेनका गांधी केस कथा लिखिबो अपन डिफरेंट केस इन ओल्गा टेलिस केस हो कि खतुनहारा केस हो डिफरेंट केसेस गुरा लिखिबो कि केमती राइट टू 21 आर्टिकल 21 रो मीनिंग हैज बीन एक्सपैंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस नोटेबल केसेस 4-5टा केस ना देले भी हबो किछ प्रॉब्लम नाही ठीक है ना तो एक गोपान केस रे देयर वाज अ नैरोर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट बट इन लैटर केस इट अपहेल्ड दैट कि it would be कण it would be माने कण it is wider perspective रे निया गला not procedure established by law but due process of law नबा पड़िबो एवं life right to life that is inherent in article 21 is not simply right to life or mere animal's existence not mere animal existence it is human life or right to life with human dignity all those required to live an honorable life or a dignified life are covered under article 21 तो जहाँ भी दरकार गोटे सुस्थ सामाजिक जीवन यापन करिया पई मनुष्यर जहाँ दरकार फूड हो शेल्टर हो डिग्निटी हो रेस्पेक्ट हो हेल्थ केयर हो एजुकेशन हो जहाँ भी दरकार सब आर्टिकल 21 अंडर आसो से फंडामेंटल राइट्स बोली कह जाए एंड तादर किछटा नोटेबल राइट्स गुरा लिखि देबो राइट टू शेल्टर राइट टू फ्री हेल्थ सर्विसेज राइट टू फ्री लीगल एड राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट राइट टू एक्सेसिबल जो कौन डिजिटल लिटरेसी राइट टू वर्क जोटा एबे कहछन सुप्रीम कोर्ट सेटा भी लिखिबो लास्ट गोटे पार्टी के 2 लाइन 3 लाइन लिखिबो कि जो केस रे सुप्रीम कोर्ट कहले एंती गोटे केस रे इन 2026 रे एंती इन जून मास रे गोटे केस रे सुप्रीम कोर्ट कहितले तो एटा गोटे आइडेंटिफाइड हबो जे यू आर अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री ठीक अछि तो एटा भी गोटे केस हेई पारे तो 21 इज टर्म्ड एज ए फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल्स राइट्स वाली सो प्रोवाइड वेरियस केसेस एटा इंट्रोडक्शन गोटे रहिला इंट्रोडक्शन रे तमे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 रे इंपोर्टेंस ता लिखिबो एवं तापरे एक्सपैंडेड स्कोप रे तुमे कण एक गोपालन केस रु आरंभ करी पूरा विभिन्न केस दबो एपे गोपालन केस रु आरंभ करी विभिन्न केस रे प्लस करी की करी जीवो तापरे कंक्लूजन दबो कि that is becoming a very all those required to related to life are included under therefore it is a fundamental of fundamental rights okay so this way you can guess it is very important okay another question that I have brought and 3 questions that I have brought for you is third question I think so before that let me have some say ki I have my own foundation batch I have my own optional batch public administration so if you are interested to join call me on 93487 and 98237 you can call me for any query or any other things related to your civil service preparation okay guidance is inevitable so you can call me on this number 93487 98237 okay next is if you are preparing for civil service you can join us if you are just aspiring to appear in the upcoming main you can join our batch that is officers answer writing batch where I am taking for 2 papers that is your GS2 and GS4 papers and English also compulsory English then we have also there are other professionals teachers who will teach you and guide you then we have foundation batch for prarambha that is a foundation batch so you can join on that for to build a career to start a career when you use this when you purchase this batch you can use my code 9Y963 any issue regarding purchase you can call me okay jodi kichi batch kinibar kichi asubida hue you can call me I will guide you you can also WhatsApp me on that number I will guide you okay so this is the batch this is the 2 major batches that are available now okay then another thing is I have what is media ethics discuss the significance in a democratic society last year we had a question from environmental ethics and the role of National Green Tribunal in promoting the ethics environmental ethics but what is media ethics and why they are in democratic society media ethics refers to transparent and accountable media
Today the media seems to be committed media. It is just favoring one or the other political parties for its political short-term gains. But media forget that it has a sole responsibility for cleansing the system, or for promoting, for building a just and egalitarian society, or a just society. It has a prime role to play. Therefore, it is called the fourth pillar of the government. But it is not doing it, is as it is seen in the recent media performance by media situation condition. If we go through media condition, then you will find a committed media, a biased media, a partial media. So what should be the media? What is the meaning of media? Transparency, accountability, justness, and impartiality, unbiasedness are the characteristic of media, and that will promote media ethics. In the present context of Indian democracy, media ethics is of need of the hour. Media should be ethical. Media should be ethical, and you will write also what will happen in 2-3 points. What will happen when media becomes ethical in a democratic society? It checks corruption. It promotes transparency in the society. It holds the state or the government accountable to the people. It upholds constitutional morality. So बहुत सारा केस रिलेटेड केस तुम्हें लिखी परिबो, that is media ethics. Okay, so these are the expected questions I have discussed with you. Hope that this session has been a very useful session for all of you, and I will be bringing similar types of sessions, and probably on one particular session for writing a particular questions. If you like this, comment, give your wise comments on the comment box. And if you are interested in joining my foundation batch or joining any batch in Adda, you can call me at that number. Thank you very much, and wish you all the best for your future endeavor. May the Supreme Father bless you with success, happiness, and smiles in your life. Thank you very much.